and welcome to India Matters. This week we are in Dibrughar, Assam, and our focus is on the people who make it possible for us to enjoy a cup of hot tea. It is election time and political parties are vying for the attention of the tea garden workers. They play a decisive role in at least 4 parliamentary constituencies in the state. So why did no politician make the journey to Kunapather tea estate, which was rocked by the brutal killings of its owner M.K. Bhattacharjee and his wife 15 months ago? Fear and uncertainty threatened the future of over 800 tea garden workers and their families, apart from other staff on the estate. Kunapather is close to the Assam-Arunachal border in Tinsukia district, once a stronghold of Alpha. To access it is a difficult bumpy drive through forests stretching on for kilometers. On 26 December 2012, this bungalow was surrounded by a mob of angry tea garden workers. The couple were hacked to death and the building set on fire. Police investigations have so far made no headway, and the motive behind the planters' killing is unclear. The role of Maoists is also being suspected. This burned bungalow is a ghastly reminder of the crime, but over a year later, for the 800 people who live and work on this tea estate, there is no sense of closure. 10 people who were arrested are out on bail. There is fear among tea garden executives across the state. A conclusive investigation would lead to punishment of the guilty and prevent recurrence of such incidents. This is not the first incident of violence in the state's tea gardens. The killings were followed by a lockout in the tea garden, but there was no one, no MP, MLA or trade union leader to provide assistance to the poor tea garden labor. इन लोगों का हम लोग नायक में भी 10-12 ठो आपको चिट्ठी देके उन लोग को बुलाया, हम लोग का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तुम लोग आओ देखो क्या हुआ है, लेबर से कोऑपरेट करो, मालिक से कोऑपरेट करो, लेकिन वो लोग एक दिन भी नहीं आए हैं। हम लोग को क्या खाया क्या नहीं खाया क्या किया है यहाँ का लेबर की लोग SMS जो चा मजदूर संघ हम लोग का जो अभी मार्गेटा सर्कुल में जो है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हम लोग को लिखा था, तो वो लोग नहीं। After 3 long months, the tea estate was reopened by the owner's son Rishi and work resumed. Kunapather, set over 900 acres, is said to be Assam's biggest biodynamic tea garden. But there's no visible sign of its success at the labour quarters. The families appear to live below the poverty line. The houses are kacha, made of bamboo and plastered with mud, vulnerable to rain and wind. There are no toilets, no provision for electricity, school and hospital. Permanent workers are paid a subsistence level daily wage of 100 rupees. So if they work 24 days a month, they earn 2,400 rupees. A sizable number of workers are employed as casual labour and get only 6 months employment in a year. These tea garden labour present a picture of deprivation and want. Wages are low, housing conditions are poor, children as young as 10 are put to work, and denied schooling. पहले करता था। किस चीज़ का काम? गुरु बगल। मतलब लोकल लोगों के लिए। स्कूल गए हो कभी? नहीं। Stephen inherited his job from his parents. स्कूल चाहता है, रोड चाहिए अच्छा। और कुछ? घर में इलेक्ट्रिक बाती चाहिए, और क्या चाहिए? हमें तो कमी तो बहुत चीज़ का कमी है ना। अपनी क्या मेन प्रॉब्लम है लाइट, रास्ता, ये सब का प्रॉब्लम होता है ना। छोटा छोटा अभी गरीब सब आदमी है ना, उसको कोई परिस्थिति कुछ होना चाहिए, क्या उसको देखभाल करना चाहिए, सरकार हो और कोई भी हो, उसका थोड़ा सुख लेना चाहिए। At the Gara labour quarters where all the 10 accused in the killings live, there is open anger as they recall M.K. Bhattacharjee's feudal behaviour towards them. This youth says his family was given an eviction notice after his mother retired. Their house was demolished. अभी जो काम करता है परमिट होना चाहिए, परमिट के बाद जो पैसा होता है ना वो भी मिलना चाहिए। नाम कटा देने से भी वो क्या करता था
घर खाली करके खेत देता था। हम लोग कहाँ जाएगा ऐसा में? हम लोग का माँ भी नाम कटा दिया था हम लोग का घर और खाली कर दिया। खाली नहीं करने से पहले हम लोग को केस दे दिया मार्केटा में। हम तो चेन्नई में था, काम करने के लिए गया था। तो हम लोग को बूढ़ी में कैसा केस क्या केस हम लोग को तो नहीं जानता है। उनको तो लगता है कि हम लोग भी सरकार का ही आदमी है, मालिक तो हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके बाद में सरकार तो हम लोग को कुछ देना चाहिए। आप लोगों को सहायता करने के लिए कोई आता है नहीं? हम लोग को एसी में से असम चा मजदूर संघ वो लोग बुलाने से आता है 2-4 बात बोलता है, सिर्फ चला जाता है। और बाद में क्या पैसा भी देना पड़ता है उन लोगों को, कहने से होता है। एमपी वो लोग आए हैं कभी नहीं आया, देखने के लिए भी नहीं आया। The stark reality is that the living conditions of tea garden labour are no different across the state. The Plantation Labour Act of 1951, which is meant to provide for welfare for labour and to regulate conditions of work, is being violated. Every worker, new or old, receives the same wage, which is usually 94 rupees a day, lower than the minimum wage of 150 rupees in other sectors. They do not get a paid weekly off. A few benefits like living quarters and subsidized food grain are provided. This is the case even at 100-year-old legacy gardens, where families of labour have been employed for over 3 to 4 generations. At Mokulbari Tea Estate, Anita Majhi tells us she is the only earning member of a family of 5. Her husband has been unable to work for 3 years because of his illness. None of their 5 children attend school. While her 10-year-old son does odd jobs for their neighbours for a few rupees, her 14-year-old daughter joined the plantation as a plucker 2 days ago. कर पाओगे? तो क्या ना दुख लगता है? काम निकलाई करो तो कष्ट होता है। हाँ, आधा तो खाइले, आधा एक बेला खाइले, एक बेला नहीं खिलाने और कम हो जाएगा। ठीक से एकला काम में कितना करो? तो कितना मिलता है आपको? दरमा अभी कितना में खुटिया के कमती मिलेला 500-700 इरकम में पहले 700 मिलता है सिर्फ। काटाई जला आधा खुटिया ला उतना पाइला और पूरा काम करले 900 मिलेला। মানে কোম্পানি তো জানবে যে ওর শরীর খারাপ আছে, তোমার বরের শরীর খারাপ, কোনো হেল্প করে? She says they are unable to afford treatment for her husband. The absence of proper health facilities and medical care is a major issue for all. In Hazelbank Estate, we visit the dispensary set up by the company and find neglect apparent everywhere. Just a handful of medicines and instruments are available. तो कंपनी पूरा मेडिसिन नहीं दे पा रही है? नहीं देता है। अच्छा, तो लोग जब आते हैं फिर आप उनको क्या देते हैं फिर? वो लोग जब जरूरत होगा वहाँ से मंगा देता है, बड़ा हॉस्पिटल से थोड़ा स्टॉक है। अच्छा, तो बड़ा हॉस्पिटल यहाँ से कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। बड़ा हॉस्पिटल का कंडीशन कैसा है? कंडीशन तो हॉस्पिटल ठीक है किंतु डॉक्टर नहीं है। वो एक तो फार्मासिस्ट है और 2 नर्स है। Pharmacists are members of the Assam Cha Karmachari Sanghatan, and they say they are underpaid in the tea industry compared to their counterparts elsewhere. हमारा जितना साथी है वो लोग 25,000 मिलता है, हम तो यहाँ 9,700 मिलता है। और आप लोगों का जो यूनियन है वो आप लोगों के लिए कुछ करता है? कुछ नहीं किया वो लोग। 28-year-old Lakhiram Rajgurt grew up in a labourer's family on the Auckland Tea Estate. He was the first among a population of 1,000 to complete his graduation. He says he owes it to the fact that both his parents were employed and also the fact that they were able to supplement their income by tilling a small piece of land. Today he's the teacher at the company-run primary school where he studied as a child. There are only 2 teachers for 172 students. Lakhiram remembers the teacher-student ratio as being always very high. ये तो गवर्नमेंट प्रोविजनल्स का सिस्टम चल रहा है, इसलिए कंपनी का भी हम लोग दाबी नहीं कर सकता है। और वो लोग सोचता है कि अभी तो थोड़ा दिन के बाद में तो गवर्नमेंट का अंदर में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ टीचर का देने का सिस्टम अभी तक से कंपनी तरफ से ये नहीं हुआ है। 6 क्लास में हम लोग का 6 टीचर का दरकार है, तभी 6 क्लास में तो हम लोग एक ही साथ में 6 क्लास में तो रहने नहीं सकेगा। जब ये लड़का लोग बड़ा होगा ना, कभी धर लीजिए आपका 14-15 साल तक से होगा ना करीब, तो उस समय क्या होता है, यहाँ चाइल्ड लेबर है गार्डन में, वो चाइल्ड लेबर में माँ पिताजी उन लोग को भेज देता है।
वो आपका मेडिसिन सेडिसन का काम होता है बगान में देने के लिए। और बच्चे देते हैं? हाँ, बच्चे को भी दिलवाते हैं। और जो गार्जियन रहता है उनका माँ पिताजी उनका घर में 2 पैसा आने का चक्कर में वो लोग अपना बच्चे लोग का स्कूल छुड़वा करके वो चाइल्ड लेबर में भेज देता है। 800 tea gardens and over 1 million workers. Yet none of the companies have provided the workers with a middle school. Even the lower primary school on the plantations have appalling conditions. कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम नहीं पढ़ा है। बगान में है, यहाँ में डिग्री डिप्लोमा का कोई काम नहीं है। मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा नहीं मानता है। यहाँ एक मैनेजमेंट मानता है जब तुम लेबर का लड़का है, तुम्हारा माँ का बदली में, पिताजी के बदली में काम तुम करना पड़ेगा। A generation born in the tea gardens is destined to die in the tea gardens.